सो बेसिकली आज हम बात करेंगे ईयर के बारे में। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट ईयर। सो लाइक आइस, we have two ears, okay, right and left. And what we do, we will hear the sound of anything. Okay, so this is the also a natural gift from the god, which is priceless. So ये जो ईयर है, ये भी हमें आंखों की तरह, एक जिस तरह रोशनी देखने को मिलती है हमें, ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखते हैं हम, इसी तरह हमारे कानों से सुनते हैं हम ये जो खूबसूरत सी दुनिया है उसकी आवाज को सुनते हैं। ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल गिफ्ट है गॉड की तरफ से कि हमें एक ऐसी अद्भुत चीज हमें अता की। ठीक है, तो आइए फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स, हाउ वी हियर, हाउ वी लिसन द वॉइस फ्रॉम द आईज, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके, सो हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे कि हम, यानी ये कंप्लीट ईयर के टॉपिक में, कि ईयर कहाँ पे है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, कौन से लेयर्स है, और आखिरी चीज के उससे हम कैसा सुन सकते हैं, ये सब चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो द ईयर कंसिस्ट ऑफ थ्री एरियाज, द आउटर एरिया, द मिडिल एरिया एंड द इनर एरिया। सो बेसिकली ईयर्स के तीन हिस्से हैं, यानी जो कान है हमारे उसके तीन हिस्से हैं, तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया। वन इज आउटर, दिस इज द आउटर, एंड द मिडिल एंड द इनर। सो कान को हम लोगों ने तीन हिस्सों में बांटा। सो ईयर इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स और थ्री एरियाज: आउटर, मिडिल एंड इनर। outer, middle, and inner. So the ear contains the receptors of two senses, hearing and equilibrium. These receptors are all found in the ear. So basically, what are the function of the ear? One is hearing, one is equilibrium. So यहाँ जो ईयर है उसके अंदर दो सेंस के रिसेप्टर्स, यानी दो महसूस करने वाले रिसेप्टर्स, एक है आपको सुनाई देना और एक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी जो भी आप बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग के लिए जो भी चीजें जरूरी है वो आपके ईयर में। ठीक है, तो हम लोग एक बार पिक्चर देखेंगे ईयर की। देखिए, ये हमारा ईयर है। सो यहाँ तक आपका आउटर हो जाएगा, ये मिडिल हो जाएगा, ये इनर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा ईयर होगा आप। तो हम लोग समझते हैं सिर्फ ये कान है बल्कि कान यहाँ तक है आपका। दिस इज द ईयर, हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम द inner side and outer side. So this is the ear, how it looks like. This is the in a middle and inner, and this is the outer. Okay. So let's learn the names of this. This is the auricle. This is the auricle. So this is the auricle. Whatever have we, this is the name is auricle. So ये क्या है, हमारा नाम auricle है। यहाँ पे जो हड्डी जा रही है आपको कान के लग के, जो हड्डी है उसको कहेंगे हम टेम्पोरल बोन। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईयर, ये टेम्पोरल बोन। सो जैसा जैसा हम अंदर जाएंगे वैसे वैसे उसके नाम होंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, ये जो एरिया है इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। यहाँ से ही आपका अंदर से साउंड जाएगा। तो दिस इज द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट, दिस इज द मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा जिसको कहा जाता है वो यही है, इसमें सुराख गिरता है। ठीक है, गिरने के लिए कांच का पर्दा जो कहा जाता है। So this is the tympanic member, ear membrane. Next we have the three small bones. That is malleus, incus, and stapes. This is present in the ear. Next we have semicircular canals, vestibular branch, cochlear branch, and cochlea. So these are the
One, two, three, four. Four things are connected to the eighth cranial nerve. Next, this is eustachian tube. So basically, this is connected to our nose. Okay, eustachian tubes. Okay, so I understood that this is the anatomical structure of the ear. So let's talk with outer ear. So what are presence in outer ear? Let's see. So this is the outer ear. Okay. The outer ear consists of auricle, the ear canal, the auricle or pinna. So this is auricle or pinna. This is the auricle or pinna. Okay. Is made of cartilage covering with skin. For animals such as dogs whose ears are movable, the auricle may act as funnel for sound waves. For people, however, the flat and stationary auricle is not impacted. Hearing would not be negatively affected without it, although those of us who wear glasses would have our vision impaired without our auricles. The ear canal is lined with skin that contains ceremonial sphere glands. It may also be called the external auditory meatus and is tunneled into the temporal bone, covering slightly forward and down. So basically, this is the introduction of outer. Basically, let's see that outer ear. So this is the ear. Okay. So you can see this is the outer ear. Till now, I told you this is ear, outer ear. This is the inner ear. Now, middle ear. This is the inner ear. From that, this is the inner ear. So you can see this is the auricle. Auricle also known as pinna. Okay. And this is the temporal bone. This is the auditory meatus. So basically, in the auditory meatus, we have we'll talk in uh, middle. This is the middle, and this is the inner. Okay. So we talked about outer ear, and now we'll talk about inner ear. The middle ear. The middle ear is air-filled cavity in the temporal bone. The eardrum or tympanic membrane is stretched across the end of the ear canal and vibrates when sound waves strike it. These vibrations are transmitted to the three auditory bones, the malleus, incus, and stapes. The stapes then transmit vibration to the fluid-filled inner eye at the oval window. So यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए जो हमारा इनर आउटर के बाद मिडिल ईयर आ गया। मिडिल ईयर जो स्टार्ट होता है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के खत्म होने के बाद, जहाँ पे ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दोनों को भी हम लोग दोनों को भी क्या है, एक ही कहा जाता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलिए या फिर ईयर मेम्ब्रेन बोलिए। ओके, सो बेसिकली द sound waves comes and touches to the eardrum. Okay, so what will happen, then the sound waves strike. Okay, then it will transmit it to the three auditory bones. Okay, what are the auditory bones? So this is the auditory bones. So the sound wave, the sound. So basically the sound waves is entering to the external auditory masses and it touches to the eardrum. So the eardrum vibrate and it touches to the malleus and it will vibrate incus and it will vibrate stapes. Okay, so sound waves come here and it will transfer the sound waves into the waves, into the vibrations. So हुआ क्या, यहाँ से साउंड वेव आया आपका
ऑडिटरी मेजर्स में गया, जाके ईयर ड्रम को टच किया इसने। ईयर ड्रम से टच करने के बाद ईयर ड्रम क्या करेगा, उसको वाइब्रेशन में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करके उसको मेलस, ये एक बोन है, उसको टच करेगा, वो बोन जाके इनकस को टच करेगा, वो जाके स्टेपस से टच करेगा। ओके, देन आफ्टर व्हाट विल हैपन, देन ओके, सो देन, तो यहाँ से जो आपका जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको आगे के इनर ईयर में जाएगा। ओके, सो ये आपका मिडिल ईयर का फंक्शन था। ये आपको सिर्फ साउंड वेव जाने के लिए है। ओके, या प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोई भी ऐसी चीज आपके कान में ना आ जाए जो आपको नुकसान देने वाली। और यहाँ पे कुछ फ्लूइड भी होता है ब्राउनिश कलर का, जो हमारे एकदम चिकना होता है, जिसको हम आजकल मैल कहते हैं, और ईयरबड डाल के उसको साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमारे ईयर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। ठीक है, नेक्स्ट इज वी हैव द Eustachian tube or auditory tube extends from the middle ear to the nasopharynx and permits air into the enter to leave the middle ear cavity. The air pressure in the middle ear must be the same as the external or atmospheric pressure in order for the eardrum to vibrate properly. You may have noticed your eyes popping when in an airplane or when driving to a higher or lower altitude. Swallowing or yawing creates the pop-up by opening the Eustachian tubes and equalizing the air pressure. The Eustachian tubes of children are shorter and nearly horizontal, may permit bacteria to spread from the pharynx to the middle ear. This is why otis media may be complication of strep throat. So here one thing is explaining that we have Eustachian tube. We can see that this is the Eustachian tube, what I already told you. Okay, so this is the Eustachian tube. Okay, so whatever pressure is coming, which is touching to the eardrum, is this pressure is going to there. This is coming here. We have no nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. So it will come here. You are observing this is the cavity. You can see this is the cavity which is come and release here. So basically the pressure will balance. So the pressure, what is pressure outside the uh, environment, outside the ear, the same pressure will leave from this area. So then the balancing is happen. ओके, सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो प्रेशर आ रहा है, वो प्रेशर जो है मिडिल ईयर से अ, निकल के नासोफेरिंग से निकल जाना चाहिए। ठीक है, ताकि जो प्रेशर जो एक्सटर्नल है, वो एक्सटर्नल का प्रेशर अगर ऐसा रिलीज हो जाएगा तो बैलेंसिंग हो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जब आप कोई गाड़ी चलाते हैं तो प्रेशर बाहर बढ़ जाता है। बाहर बढ़ जाता है तो प्रेशर जब आप कान में और नाक से जब एयर जब साउंड साउंड वेव्स आते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से ज्यादा आपको साउंड वेव्स नजर आते हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर क्या है, बढ़ने की वजह से आपको ये साउंड वेव ज्यादा नजर आते हैं। तो प्रेशर जब बराबर होगा आउटसाइड ऑफ द ईयर एंड releasing off from the ear, middle ear is very balancing, then you will hear the sound waves very normal. Okay, so sometimes what will happen, throat infection will cause ear pain. किसी किसी को क्या होता है कि गले में जो खराश आ गया, गले का जो बैक्टीरिया है, वो इसी मेम्ब्रेन से, इसी पैथवे से ईयर तक पहुंच जाता है, ईयर ड्रम में हो जाता है, कभी बोन्स में हो जाता है, जो शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ईयर है उसमें हो जाता हमारे वेट जो इंडिशन है। So this is all about middle ear. Next is inner ear. So inner ear have number of things. Okay. So basically we have to understood all those things. Inner ear, within the temporal membrane, the inner ear is cavity called the bony
Labyrinth. A labyrinth is a series of interconnecting paths or tunnels, somewhat like a maze but without dead ends, which is lined with membrane called the membranous labyrinth. Perilymph is the fluid found with bone and membrane, and endolymph is the fluid within the membrane structure of the inner ear. These structures are the cochlea, concerned with hearing, and the atrial, saccule, and semicircular canals, all concerned with equilibrium. So basically, so here we have the, at last we have the cochlea, cochlear branch, semicircular canal, vestibular branch. So basically, all this will help us for hearing as well as equilibrium for the body. So this is the inner part. Okay, this is the middle part, middle area, and outer area. So all this will connected to each other. So our body or functional things, what we have to done with our ear will done by this proper way. सो यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर्स पूरे के पूरे आपको हियरिंग करने के लिए और इक्विलिब्रियम करने के लिए आपको ज्यादा फायदेमंद है। तो इनर ईयर, आउटर ईयर और मिडिल ईयर इसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट वहां से आपको कॉकलिया देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए, ये जो स्नेल जैसा स्ट्रक्चर है, स्नेल कैसा नजर आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, कॉकलिया। सो कॉकलिया एंड अदर रिलेटेड थिंग्स विल स्टडी विल टुमारो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट